yesterday हमने बहुत रिवाइज किया था भारत की सारी चीज़ें सारी we talked about कि what are the OOPS concepts are there. So there are 4 OOPS concepts. All of these concepts are talking about object only. So OOPS stands for object concepts. There are 4 pillars of OOPS: encapsulation, in polymorphism and abstract. ये चारों चीज जो ये all the 4 concepts are talking about only. पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनकैप्सुलेशन मतलब आपका ऑब्जेक्ट का डेटा सिक्योर. And how do we make the data secure? By making private and providing setters. Second, inheritance concept में हम क्या करते हैं? We defined one object. We defined one object, and how do we create an object? First, we will have a class, and using that class, we will create the object. Then I want to create another object using the existing. So I want to inherit the properties and methods of one object into another object. So inheritance is the concept saying that one object can acquire the properties and behavior of another object. Then polymorphism means poly means many and morph means behavior, method or a function. Then polymorphism concept is telling that one object have multiple behavior or one object same name. That is the polymorphism. Abstraction means incomplete. Abstract means incomplete, or abstraction means hiding something. So there we are hiding the functionality. Abstraction, it is a mechanism which helps you hide the the methods of the object. The object का जो functionality है, उसका जो implementation है, वो आप hide कर सकते, right? And that every object like object should hide the implementation. Is what it is telling. देन उसके बाद हमने इनहेरिटेंस और डिटेल में देखा था कि अगर आपने कोई क्लास डिफाइन किया, बहुत सारे वेरिएबल्स मेथड्स डिफाइन करे थे, और सेम कोड आपको मल्टीपल क्लासेस, मतलब सेम कोड आप मल्टीपल क्लासेस में लिख रहे हो. अगर मेरे पास 10 क्लासेस है और 10 क्लासेस में सारा कोड एज इट इज सेम है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स है और कुछ वेरिएबल्स है, आपका कोड डुप्लीकेशन हो जाएगा. सेम code you are writing in again and again in different classes plus extra you are code writing, so that code duplication you are doing. So if I use inheritance, I can avoid this. I will define the class only once and I will try to reuse the code again and again. So we talked about what is inheritance. Inheritance is a process of acquiring or inheriting the non-private, non-static members from one class to another class or one from one object to another object. It acquires state and behavior. State को properties बोला जाता है, variables, fields, attributes, and behaviors को methods, operation, function, task बोला जाता है, from one object to another. Inheritance represents is a type of relationship. क्या represent करता है ये? Is a type of relationship. So why to use inheritance? So we use inheritance to reuse the, किस चीज के लिए यूज करते हैं inheritance? To reuse the code. हाउ डू वी रीयूज द कोड और इनहेरिट द कोड? तो पहले आप क्या करते हो, पहले क्लास डिफाइन करते हो, देयर यू डिफाइन कॉमन डेटा एंड मेथड्स, उसके बाद यू डिफाइन अनदर क्लास, or maybe there is already class present and you want to use the code from that particular class, so you define a subclass or child class and you write the extends or implements keyword and you use the class name from where you want to inherit, and then we create the object of that particular subclass and start using the variables and methods. Then हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास. पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास, इट इज अ क्लास which contains common data and methods, and this class code will be reused by some other class. Then child or a subclass or a derived class, it is a class which inherits or acquires the properties and behavior of some other class. It is a user, it is kind of a consumer if you think of. And we also talked about interface. Interface also kind of a class, just like a class, but which does not have instance instance block, lot of many or whatever it is required, like instance specific is not there. Instance variables, instance method, instance block in classes, this is not there inside. The constructor is also not there inside the interface. This is also kind of a class. Then we talked about the types of inheritance. Single level inheritance, इसमें होता क्या है कि एक क्लास आप डिफाइन करते हो और उसका कोड दूसरे एक ही क्लास में यूज, so one class extends only one another class. That is called as single level inheritance, and it is supported in Java through classes as well as through interfaces.
In this case, A is a parent class and B is a child class. So A class code is used by B. So B class acquires the properties and behavior of A. Then we also talked about multi-level inheritance. तो होता क्या है कि one class extends another class and that class is extended by some other class. यहाँ पर A class is extended by B class and B class is by C class. ये बन जाता है आपका multi-level. And this is supported in Java. Yes, it is supported in Java through classes as well as through interfaces. And उसके बाद cyclic inheritance होता क्या है कि when one class tries to extend itself, it is called as cyclic inheritance, and it is not possible in Java through classes as well as through interface. Then we talked about multiple inheritance. Multiple inheritance, remember like this, diamond. So this is a class. C class is trying to acquire the properties of class A and B. So one class is trying to extend from more than one classes. It is called as multiple inheritance, and it is not supported through classes because uh, if this particular class extends A as well as B, and both your A class and B class contains the same variable and same method, then this particular D class will have the ambiguity that which member to access, either from A class or either from B class. To avoid this confusion or ambiguity, multiple inheritance through classes, but it is supported through interfaces, क्योंकि इंटरफेस में ये सारी चीजें कुछ भी इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, ये चीजें नहीं होती. तो ए क्लास को कोई भी कंफ्यूजन होगा, I1 and I2, it can get the properties and behavior from I1 as well as I2. This is supported through interface. So multiple inheritance is supported through interfaces. And how it is supported? It is supported as interface does not contain instance variables, instance method, constructor, and instance block. Due to this, child class does not have any confusion. Hierarchy also we discussed when one class is extended by more than one class. अभी यहाँ पर एक A class है, की properties and methods B, C and D classes extend करिए, acquire करिए. Then hybrid, when we combine multiple inheritance with any other type of inheritance, it becomes hybrid, and it is not supported classes, but it is supported through interfaces. How to achieve inheritance? We achieve inheritance using extends or implements keyword. And what are the valid combinations? So one class extends another class, one interface extends another interface, one class implements another interface, one class implements another interface. यही तीन वैलिड कॉम्बिनेशन है, बाकी सारे इनवैलिड. देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बात हो रही थी हमारे. कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस होता क्या है? एवरी कंस्ट्रक्टर इन जावा देयर इज अ इम्प्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर. मतलब ऑटोमेटिकली सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो. If you want to explicitly call the super class constructor from child class, we use the super. And what is constructor chaining? It is a process of calling one constructor from another constructor. We can call the super class constructor from the child class constructor exclusively or explicitly using the super keyword. We can call the same class constructor from same class constructor using this. So this का use करके आप same class का constructor call कर सकते हो from another constructor of the same class. Now, how many constructors we can call from the given constructor? We can call only one constructor, right? And constructor call must be the first line in the constructor, otherwise you will get the compiled error. फिर उसके बाद हमने बहुत डिटेल में देखा था कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर इन द इनहेरिटेंस. तो सबसे पहले जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी, एंड बिफोर दैट पेरेंट क्लास मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी. तो सबसे पहले जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो चाइल्ड क्लास, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका पेरेंट क्लास लोड होगा, फिर चाइल्ड क्लास लोड होगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टार्ट होगा. Parent class will be loaded first, then its static block will be executed, then child class will be loaded in the memory, then its static block will be executed. Then after that, when you create the object of child class constructor will be called, and from the child class constructor it will check two things: call to the super class constructor if it is there, or it will execute the instance block and rest of the code inside the child class of the constructor. Similarly, then control will go to the super class constructor. There also it will check two things: call to the constructor or instance block. अगर दोनों नहीं है तो सीधा rest of the constructor call will be executed. And this is the
execution. Static block of parent class, static block of child class, instance of parent class, instance of parent class, instance block of child class, instance of child class. ये हमने कल लास्ट देखा था. This was the content we have covered last class. Clear on this? Okay. Now today we have to learn few things. क्या तक clear है सब कुछ? Now we will cover some scenarios and then we will directly head to the interview questions. पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस. तो आपके पास 4 सिनेरियोज है. सबसे पहले आप क्या करते हो, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एंड यू गेट अ रेफरेंस इक्वल टू न्यू पेरेंट. पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास. इसमें आप मुझे बताओ, इस रेफरेंस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, विच मेंबर्स यू कैन only parent class, not child class. Using this reference we can access only parent class members. Using this reference, remember, we cannot access anything from the child class. Remember this, we cannot access anything from child class. We access straightforward है. पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो किसका एक्सेस करोगे, बस पेरेंट का. क्या सेकेंड थिंग, child class object, child class reference. What do you think? Using this reference क्या करोगे आप, using this reference can access. अभी देखो सिंपल इसका लॉजिक है, बहुत सिंपल है. क्या, if the members are only present the parent class, then कहाँ से access, then it will access from parent class. मतलब चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं है, कहाँ से एक्सेस होगा, पेरेंट का. इट्स एग्जाम्पल, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, आप पेरेंट का एक्सेस कर सकते हो. इफ द मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट इन द चाइल्ड क्लास, आपके पास ही मेंबर, आप कहाँ से एक्सेस, योर पेरेंट डज नॉट हैव द मोबाइल, आप कहाँ से एक्सेस करो, देन इट विल बी एक्सेस फ्रॉम चाइल्ड क्लास. तो आप खुद ही एक्सेस करो, चाइल्ड क्लास खुद का तो एक्सेस कर ही सकता है. मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड द, ऐसा हो सकता है ना कि कुछ वेरिएबल, जैसे पेरेंट क्लास ने कुछ 100 वेरिएबल्स लिखे, 100 मेथड्स लिखे, वो सारे किसको अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, चाइल्ड क्लास. लेकिन ऐसा भी कुछ डेटा हो सकता है, ऐसा भी कुछ मेथड है वो बस चाइल्ड क्लास में ही है, वो पेरेंट क्लास में नहीं. ऐसा क्यों हो सकता है, इट इज एडिंग सम न्यू फीचर्स एंड एडिंग न्यू वेरिएबल्स, दैट डेटा आल्सो ही कैन एक्सेस. जो प्रेजेंट पेरेंट का है वो तो एक्सेस कर ही पाएगा, लेकिन जो डेटा बस उसके पास ही है, पेरेंट के पास नहीं है, तो वो भी एक्सेस कर सकता है. यस और नो? देन इफ द मेंबर्स आर present in both parent and child class, कहाँ से एक्सेस करेगा, दोनों भी है, दोनों मेंबर, पेरेंट में भी है सेम मेंबर और चाइल्ड में भी है, कौन सा एक्सेस होगा, ऑब्वियसली एक ही एक्सेस होगा, वन कॉपी. आप जब भी उसका रेफरेंस का मिलेगा, आप कौन सा एक्सेस होगा, चाइल्ड क्लास. बस सिंपल है, अगर पेरेंट के पास है तो पेरेंट का एक्सेस होगा, अगर बस चाइल्ड के पास है तो चाइल्ड का एक्सेस होगा, अगर दोनों पेरेंट के पास भी है और चाइल्ड के पास है तो किसका एक्सेस होगा, चाइल्ड का. सिंपल है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है. देन
थर्ड केस, अभी यहाँ पर भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस। पेरेंट पीसी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो ऑब्जेक्ट किसका बना है, लेकिन आपने उसको स्टोर क्यों कैसे किया है, दिस इज वन ऑफ द थिंग यू विल रिमेंबर। बाकी सारा तो सब सेम ही है, बस आपको ये याद रखना है। व्हाट डू यू थिंक? If the members are only present in the parent class, then it will access from parent class. Perfect. There is no change. If the members are only present in the child class, then it will be compile time. Cannot access the child class. बस रेफरेंस किसका है, पेरेंट का। अगर बस चाइल्ड में ही प्रेजेंट है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर बस पेरेंट में प्रेजेंट है तो एक्सेस कर सकते हैं, अगर बस चाइल्ड में प्रेजेंट है तो एक्सेस नहीं कर सकते। और तीसरा, if members are only present in both parent and child class, then दो चीज याद रखना, then variables will be accessed from parent class, methods will be accessed from I will be explaining all of this with the example also. Lastly, child cp equal to parent, ये है आपका सीधा सीधा कंपाइल टाइम एरर। गेट कंपाइल टाइम एरर, सीधा सीधा आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। अगर ये लिखोगे आपको तो सीधा सीधा कंपाइल टाइम एरर आएगा। सबसे पहला वाला, सबसे लास्ट वाला तो आपको बहुत सिंपल है, इसमें ये पॉसिबल है ही, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और उसको स्टोर कर रहे हो चाइल्ड क्लास के रेफरेंस के साथ, तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर इसमें। सबसे पहला वाला पेरेंट, पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, तो उसमें आपको सीधा सीधा क्या करना है, पेरेंट का एक्सेस करना। यहाँ पर क्या दोनों केस में क्या कर रहे हो आप, ये दोनों केस इसमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, पेरेंट का, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, उसको स्टोर किया पेरेंट क्लास रेफरेंस। इसमें सब कुछ आप पेरेंट का ही एक्सेस करोगे, देयर इज नथिंग यू कैन एक्सेस द चाइल्ड क्लास। दूसरे में सीधा सीधा आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको आपने कैसे स्टोर करने का ट्राई किया, चाइल्ड क्लास रेफरेंस के साथ, तो ये नहीं चलेगा कंपाइल टाइम एरर। थर्ड, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास रेफरेंस, इस केस में अगर मेंबर पेरेंट में है ही तो पेरेंट से एक्सेस करो, अगर बस चाइल्ड में है तो चाइल्ड से एक्सेस करो, अगर दोनों में है तो फिर भी कहाँ से एक्सेस करोगे। और ये लास्ट वाला केस, इसमें क्या है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसको स्टोर किया आपने पेरेंट क्लास रेफरेंस के साथ। सबसे पहला वाला, अगर बस मेंबर पेरेंट में प्रेजेंट है तो पेरेंट से एक्सेस करो, अगर बस मेंबर चाइल्ड में है तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। और अगर मेंबर इट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो वेरिएबल कहाँ से एक्सेस होगा, पेरेंट क्लास से, और मेथड एक्सेस होगी चाइल्ड क्लास से। याद रहेगा, विल टेक दिस एग्जांपल once again. I will write this in a tabular format so you remember. Here, केस नंबर या सिनेरियो बोल सकते हो आप, बात हो रही है मेंबर प्रेजेंट ओनली इन चाइल्ड क्लास, लास्ट वाला तब दोनों में प्रेजेंट है।
सबसे पहला वाला पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? पहला वाला केस है, देखो पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, मेंबर प्रेजेंट ओनली इन पेरेंट क्लास ओनली, होगा एक्सेस, कैन एक्सेस, member present only in child class, can it access? यहाँ पर parent only access होगा parent से। सेकेंड केस यहाँ पर भी सेम ही है आपका, और यहाँ पर बस चेंज क्या हो रहा है, ये आएगा आपको by time, then we have parent sorry child equal to child, यहाँ पर members are only present inside the parent class, तो parent class से access होगा, members are only present in the child class, तो child class से access होगा, members are present in both parent and child, तो कहाँ से access होगा, child। लास्टली सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर रेफरेंस चेंज होगा, पीसी, तो यहाँ पर ओनली मेंबर्स प्रेजेंट है तो पेरेंट्स एक्सेस होगा, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास से तो कंपाइल टाइम, और मेंबर्स आर प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो वेरिएबल्स विल बी फ्रॉम पेरेंट एंड मेथड्स फ्रॉम, याद रखो आपका पूरा का पूरा सारा इंटरव्यू प्रिपरेशन यहीं पर है, ठीक। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल हैव ऑन दिस एरिया ओनली, सारा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। पेरेंट क्लास, फर्स्ट केस वी आर लुकिंग इनटू, यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, इंट ए, इंट ए, बी, और कुछ मेथड, right, m, this method is present, simple, I will create another child class. Now how do I create this child class? This is not a child class, we have to make this as child class, extends period. Now you see here I have some variables x, y, और method है let's say m2, child class m2. Now I create object of parent class, first case बात क्या हो रही है, parent parent equal to new parent, यहाँ पर क्या एक्सेस करोगे आप, parent dot only a, parent dot b only, और parent dot m1, आप चाइल्ड का कुछ एक्सेस कर सकते हो क्या, कैन यू एक्सेस एनीथिंग, parent dot x you cannot do that, parent dot y you cannot do that, and parent dot m2, get all of this compile timer, so using this आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यू कैन एक्सेस फ्रॉम द पेरेंट क्लास, चाइल्ड का आप कुछ एक्सेस कर सकते हो क्या, कैनॉट एक्सेस एनी, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस, केस में आप किसका एक्सेस करोगे, बस get the compile timer in this, so try to access, try to access, आपको कंपाइल टाइमर राइट। देन दूसरा केस मैंने आपको अभी बताया था, सेम यहाँ पर चीज होती है, सेम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन रेफरेंस आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड
अगर आप ये करते हो तो यू गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपाइल टाइम एरर, आप चाइल्ड क्लास को नहीं दे सकते। सिंपल है, इसको कैसे याद रखोगे? डू यू गेट नेम फ्रॉम योर पेरेंट, और मतलब आपसे नाम पेरेंट को मिलता है, पेरेंट का नाम आपको मिलता है? किसका किसको नाम मिलता है? पेरेंट का हमें मिलता है, राइट? हमारा तो उनको नहीं मिलता, राइट? तो इस केस में आप बोल रहे हो कि पेरेंट इज गेटिंग द नेम फ्रॉम चाइल्ड, इनवैलिड है कंपाइल्ड है। तो आप बोल रहे हो कि पेरेंट इज ए टाइप ऑफ चाइल्ड, मतलब आप मतलब सरनेम किसको किसको मिल रहा है? चाइल्ड का पेरेंट को मिल रहा है इस केस में। आप मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, मतलब यू आर गिविंग सरनेम टू योर पेरेंट, इट इज इनवैलिड, यू कैनॉट होल्ड दैट, राइट? लेट्स से अभी लेट्स से स्वप्निल, स्वप्निल पाटिल, राइट? स्वप्निल शिंदे, so can I call you only Shinde? Can I call you only Shinde only? Yes. How is it possible? Because you are a type of Shinde only parent. So I can call you. What is that thing? Parent is equal to new child. Child is a type of, ये किस बाइबल है, ये चल जाएगा, ठीक है? दिस थिंग वी विल लुक इनटू। इससे पहले हम देखते हैं दूसरा वाला केस। दिस वाज सिनेरियो नंबर 1। ऑब्जेक्ट क्रिएशन देख रहे थे हम, और यहाँ पर हमने देखा सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो 1 एंड 2 इसमें हमने देखा। What we will do now, we will just create the scenario number 2। So scenario number 1 and 2 we have covered here। Scenario number 1 and 2, are you clear with this? 1 and 2 में क्या है? बस दिस ईयर 1 एंड 2, यहाँ पर बस पेरेंट का ही एक्सेस कर पाओगे, चाइल्ड का कुछ एक्सेस नहीं कर पाओगे। और दूसरा है आपका, आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का रेफरेंस यूज और यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वी कैन नॉट स्टोर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास रेफरेंस। और यहाँ पर उल्टा, दिस इज थिंग, ये जो बोला है मैंने इसको ऐसे बोला जाता है, दिस इज द थिंग। ये कंपाइल टाइमर जो लिखा है तो बोला जाता है ऐसे, दिस वन। तो दूसरा, वी कैन होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो आपके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। दीज टू थिंग्स यू, वी कैन नॉट होल्ड पेरेंट क्लास रेफरेंस, बट वी कैन होल्ड चाइल्ड यूजिंग क्लास। तो रीड कैसे करते हैं? चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट, चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट। पेरेंट आपके टाइप के नहीं है, आप उनके टाइप के हो, राइट? यू आर अ टाइप ऑफ पेरेंट, दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट। So you cannot say कि parent is of your type, no, you are of type parent। This is give you compile timer, ये आपको compile timer दे, ठीक है? ओके, ये वाला दोनों सिनेरियो क्लियर है। पेरेंट का तो सब कुछ पेरेंट के एक्सेस करेगा, पेरेंट क्लास रेफरेंस, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, वो उनका एक्सेस करेंगे। चाइल्ड का कुछ एक्सेस कर सकते हैं इसमें। और दूसरा सिनेरियो था पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट, लेकिन आपने उसे होल्ड किया था चाइल्ड क्लास रेफरेंस के साथ, ये कंपाइल टाइमर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक, क्लियर? This is scenario 1 and 2 we have covered। Scenario number 3, now members are only present। Scenario number 3 क्या है? Scenario number 3 आपका parent class, what is scenario number 3? This one, child equal to child। See here, uh,
Now child class is completely empty. Child class is now completely empty. Now I try to create object of child class, child equal to new child. तो आप यहाँ से चाइल्ड क्लास का रेफरेंस यूज करके पेरेंट क्लास का सब कुछ एक्सेस कर सकते हो. हियर आर यू एबल टू एक्सेस पेरेंट क्लास एवरीथिंग? यस, एवरीथिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास. इफ मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट, अभी सीन नंबर आपका 3 है जहाँ पर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास है. तो यहाँ पर मेंबर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? बस पेरेंट क्लास में. तो किसका एक्सेस होगा? पेरेंट क्लास का. 00 पेरेंट. और दूसरा केस, पेरेंट क्लास इज लेट्स से इज नॉट हैविंग एनी मेंबर, मेंबर्स आर प्रेजेंट ओनली चाइल्ड क्लास. ये कहाँ से एक्सेस होगा? चाइल्ड क्लास. एंड तो बस मेंबर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? चाइल्ड क्लास. यू विल एक्सेस फ्रॉम. ये दूसरा केस, उसमें चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास रेफरेंस. पहला केस था सब कुछ पेरेंट में प्रेजेंट है तो पेरेंट का एक्सेस होगा. दूसरा केस, उसमें दूसरा केस क्या है? नंबर 3 चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास रेफरेंस, उसमें 3 केसेस है. बस मेंबर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? पेरेंट में. पेरेंट का एक्सेस होगा. दूसरा केस, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, तो चाइल्ड का एक्सेस होगा. यस, परफेक्ट, हम एक्सेस कर पा रहे हैं. यस. अब तीसरा केस, मेंबर्स आर प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड. अब मैं इसको वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 10 और इसकी 20 और इसकी मेथड लिख रहा हूँ. आप बताओ किसका एक्सेस होगा? चाइल्ड. एक्सेस फ्रॉम. यस, तो आंसर विल बी 100 200. 100 200 चाइल्ड क्लास. 100 200 चाइल्ड क्लास है. समझ में आ रहा है? तीनों आपका केसेस क्लियर है? ये देखो ये वाला, यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास रेफरेंस. इस केस में मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट, तो पेरेंट का एक्सेस होगा. चाइल्ड में भी प्रेजेंट होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे. अगर दोनों में प्रेजेंट है तो कहाँ पर एक्सेस करोगे आप? पेरेंट का. और चाइल्ड का केस में क्या है? चाइल्ड भी इक्वल टू न्यू पेरेंट. इस सिनेरियो में ये तो गलत सिनेरियो, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं. इस रेफरेंस में कुछ कर सकते आप. यहाँ अभी हम देख रहे हैं ये वाला की सिनेरियो. यहाँ पर इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? चाइल्ड चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड. और यहाँ पर आप इस रेफरेंस का यूज करके अगर मेंबर पेरेंट में प्रेजेंट तो पेरेंट का एक्सेस होगा. बस चाइल्ड में प्रेजेंट है तो चाइल्ड का एक्सेस होगा. और दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है तो इसका प्रेजेंट होगा, इसका एक्सेस होगा चाइल्ड का. क्लियर? ये तीनों केसेस और तीनों सिनेरियोस. ईच सिनेरियो हैज 3 केसेस. सिनेरियो इसका तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा कंपाइल टाइम. पेरेंट पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट, इस केस में सब कुछ पेरेंट का एक्सेस होगा. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट चाइल्ड. होगा तो किसका एक्सेस होगा? पेरेंट का. थर्ड सिनेरियो, अगर पेरेंट में होगा बस तो पेरेंट का एक्सेस होगा. अगर बस चाइल्ड में होगा तो चाइल्ड का एक्सेस होगा. और दोनों में प्रेजेंट है तो चाइल्ड का. वन लास्ट सिनेरियो यहाँ पर, इस केस में सिनेरियो नंबर 4 में है. सिनेरियो नंबर 4, व्हाट इज सिनेरियो नंबर 4? पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. क्या है इसमें? पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फर्स्ट टाइम यू माइट लुक की बहुत सारा सिनेरियोज है. क्या देखो, members are only present in the parent class. members are only present in the parent class. तो किसका एक्सेस होगा? पेरेंट का. किसका एक्सेस होगा? पेरेंट का. तो आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पर आएगा 10 20 और पेरेंट क्लास की M1 में. ठीक है. नाउ जस्ट रिमूव दिस एंड आई विल जस्ट कीप दिस. अब बस मैं क्या कर रहा हूँ? मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट इन द
अरे चेंज नहीं किया, यहाँ पर कंपाइल टाइम मेरा आर बी एबल टू एक्सेस, मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट इन द चाइल्ड क्लास, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते. वन लास्ट केस, इन दैट केस मेंबर्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट एज वेल एज इन द चाइल्ड. अभी आंसर क्या आएगा? वेरिएबल विल बी फ्रॉम पेरेंट क्लास, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 1020, और मेथड फ्रॉम ऑफ द चाइल्ड क्लास. Congratulations, you have completed your inheritance. Let's check that. Questions will cover also now. So different use cases we have also covered everything. We have covered what is inheritance, why do we need, how to use different types, access specifiers, super keyword, different use cases we have talked about. Okay. One last thing there is pending about the super keyword. Now this class has some variables. Int equal to 100. There is a method called as display. Prints now I have another class, as child class, the relationship. Child class extends, और इसकी वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1000. नाउ इस डिस्प्ले मेथड में मुझे क्या करना है? मेरे पास एक और एक वेरिएबल है, int a इक्वल टू 10,000. अब मेरे पास तीन वेरिएबल, मेरे पास कितने वेरिएबल्स है? नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस a, व्हाट इज दिस a? तो लोग, हाँ, ये वाला वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? परफेक्ट, लोकल वेरिएबल. ये क्या है, कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल. अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड अ मेथड, इनसाइड अ ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल. तो आप लोकल वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. विल प्रिंट द ए. यहाँ पर क्या प्रिंट होगा आपका? 1000. प्रिंट 1000. देन नेक्स्ट, I want to print this value a. What is a? Line number 4. What is that a? Instance variable. What is that? Or how do we access instance variable? और हाउ डू आई कॉल दिस मेथड ऑब्जेक्ट? अभी लेट से मुझे क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, चाइल्ड चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड. अब मुझे बताओ डिस्प्ले मेथड कैसे कॉल करूँ मैं? डिस्प्ले मेथड कैसे कॉल करूँ मैं? चाइल्ड डॉट डिस्प्ले. परफेक्ट, चाइल्ड डॉट डिस्प्ले. यहाँ से कंट्रोल आया, यहाँ पर ऑलरेडी एक अपने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? चाइल्ड, तो एक रेफरेंस पॉइंट कर रहा है चाइल्ड, और वो ऑब्जेक्ट बन गया आपका. उस ऑब्जेक्ट को एक और रेफरेंस ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है. व्हाट इज दैट? तो एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज वन मोर रेफरेंस. व्हाट इज दैट? आपने दिस सुना है? तो अगर मैं a लिखता हूँ, नाउ माय लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल बोथ आर हैविंग द सेम नेम, तो हाउ डू आई डिफरेंशिएट? आई राइट दिस डॉट a is instance variable, the same, correct? Now from this method,
I want to access the value of parent class value to access. क्या करना है मुझे इस मेथड में पेरेंट क्लास का मतलब मेरा ये हो मतलब चाइल्ड क्लास का ये तो मुझे कैसे एक्सेस करूँ हाउ डू एक्सेस दिस तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो पेरेंट क्लास की भी object, so that object is also having one reference variable. What is that? Perfect और क्लास वेरिएबल तो कैसे एक्सेस करो सुपर डॉट यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा आपका भी local variable 10,000 instance variable of the same class 1000 and super class instance of that is 100. Now if I remove this variable, if I comment out this, what is the output now? This line huh? There is no local variable तो डायरेक्टली वो क्या प्रिंट करेगा इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू दैट विल बी 1000 ठीक ये है 1000 ये लोकल वेरिएबल नहीं है ये कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल ही प्रिंट कर दिया उसने नाउ इफ आई कमेंट आउट दिस लाइन आल्सो इफ आई कमेंट आउट दिस लाइन आल्सो अभी आपके पास एक ही वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल है वो सुपर क्लास का तो आप ए लिखो या दिस डॉट ए लिखो या सुपर डॉट ए लिखो तीनों किसको रेफर कर रहे हैं सुपर क्लास की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 100 तीनों जगह पर आपका 100 सिंपल 100 100 100 अब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 1000 और ये यहाँ पर भी दिस डॉट ए 1000 और यहाँ पर 100 ये समझ में आ रहा है डिफरेंस परफेक्ट क्लियर है नाउ देयर इज वन मोर फेवरेट क्वेश्चन in the interviews usually they ask I will create a grandchild now grandchild extends child grandchild extends child यहाँ पर मैंने मेन मेथड लिखी नाउ इस क्लास के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स और ये एक मेथड लिख दिया ग्रैंड चाइल्ड ने लिख दिया 98,098 लाइन और ये लोकल वेरिएबल लिखा उसने 120 आप मुझे बताओ यहाँ पर लोकल वेरिएबल इस मेथड का है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 123 और दिस डॉट ए क्या प्रिंट करेगा आपका 989898 और सुपर क्लास सुपर डॉट ए क्या प्रिंट करेगा 100 के ग्रैंड चाइल्ड का सुपर कौन है हाउस विल प्रिंट 1000 और यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका ग्रैंड चाइल्ड का आई विल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रैंड चाइल्ड 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 ऑल द मेथड यहाँ पर 123 9898 एंड अभी बहुत सारे लोग होशियार लोग हैं अभी मुझे क्या करना है ये 100 प्रिंट करना है तो आप ऐसे बिल्कुल भी मत ट्राई करना सुपर डॉट ए ये नहीं ये नहीं चलता है गेट कंपाइल टाइम एरर तो ग्रैंड पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते कंपाइल टाइम एरर सुपर डॉट ऐसे कुछ होता नहीं है इज ऑल्सो आस्क लॉट ऑफ पीपल आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन याद रखना सुपर डॉट ऐसे कुछ ठीक चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस
Okay. What is inheritance in Java? As we know that what is the syntax of inheriting a class in Java? क्या syntax है? One class extends another class. And what is a super class? What is parent class? The main class. What is main? So the class which contains some common data and that class is being used by this super class, and subclass is the user, kind of a consumer who reuses the code from some other class. What is the purpose of inheritance? To reuse the code. It's actually you reduce the code also. You are reusing the code also. What are the different types of inheritance in Java which are supported? Which are supported? Single level, multi-level, multiple, hierarchical, and hybrid. In Java, it is either supported through classes or it is supported through interface. It is supported. What is the purpose of super keyword in Java? What is the use of super keyword? What is the purpose of super keyword? Parent class variables and parent class instance methods. Using super keyword, we can call or access the parent class variables, parent class methods, and call the parent class constructor also. What is the difference between super brackets and super? The method नहीं वो constructor call है. Yes, constructor call and super is call के लिए. Okay. Now, can a subclass call the private methods of a superclass in Java? No, answer is no. Can a subclass access the private instance variables of its superclass in Java? No. What is the use of instance of operator used in Java? ये देखने वाले हैं हम. Of we cover of this. Can a subclass have constructor with the same name as the superclass? No, answer is no. क्योंकि कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? Correct. What is constructor chaining? Calling one constructor from another class or another constructor. What is the purpose of default constructor in Java? Using default constructor, we initialize the object with the dummy default values as suggested by compiler. What is the difference between this and super? This will call the same class constructor and super will call the parent class constructor. What is the diamond problem in Java? Multiple inheritance. So what is that? One class reuses the code from more than one classes. So, but if it is doing so, what will happen? There will be confusion for the child class. What confusion it will be? Which member to access? If both the classes are having the same members, then which member to access? The confusion for the. How is the diamond problem resolved in Java? So uh, it is resolved using interface, because interface में आपका ये सब कुछ. What is the object class in Java? The object class will be seen differently. The object class is the top class. Is the top class मतलब सारे जो भी जावा के क्लासेस है उन सब का पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास. देयर इज ओनली वन क्लास
which is directly or indirectly parent of all of the classes in, आपको extends लिखने की जरूरत नहीं है, directly it is a parent. So object class is the super class of all of the classes. Object class is present inside java.lang package and it is a cosmic class. तो उसके ऊपर दूसरा कोई further parent नहीं, cosmic class बोला जाता है. So we'll be learning this separately. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स के अंदर बहुत सारी 11 मेथड्स, ये सारी मेथड्स हम पढ़ने वाले. It is the ultimate parent class for all of the Java classes. And what method does the object class define? There are 11 methods. Yes, this class can be subclass. Okay, let's head over to the interview section and we will try to answer interview questions. Inheritance. So there are a lot of so what is inheritance? Why need that we have already covered. What is a type of relationship? When you use the keyword extends, it establishes the is a type of relationship. What is the superclass and subclass? A superclass is the class which contains the common data and methods, and subclass is the class which uses the code. How is it implemented? By extends and implement keyword. What is the syntax for creating the subclass? We use the extends key. Subclass name, extends, and the superclass name. Which class in Java is the superclass of every other class? That is a object class. Can a class extend itself? No. Can we assign superclass to subclass? Superclass to subclass. Case number 2. Superclass का object बनाया तो उसको child class का reference assign किया था. We cannot do that. Can a class extend more than one class? No. Answer is no. Multiple instances is not supported through classes. Are constructors and instance blocks are also inherited to the subclass? No. They are with the parent class. Are static members inherited to the subclass in Java? No. They belong to the parent class. Can we extend final class? So final class keyword हमें भी देखना हो. Final keyword. If you make a class final, that class cannot be inherited. अभी इस class को मैं बनाता हूँ final. Final बना दिया तो यहाँ पर देखो this class cannot be extended. If you make a class final, that class cannot be extended. Can a final method be overridden? We will be talking about the final keyword. If I use the final keyword with the method cannot be overridden. Can we inherit private members? No. What is the order of constructor calling constructor? First of all, constructors of parent class and the child class constructors will be executed. Which keyword is used to inherit a class? Extends keyword use करते हैं हम. What are the advantage? Code reusability and we avoid the code duplication. There are different these types of inheritance we have talked about. What is single level inheritance and multi-level? One class extends only one other class. Multi-level, one class extends another class and that class extends some other class. Multiple, one class has many super classes is known as multiple inheritance. In other words, one class extends multiple classes and it is not supported in Java through classes, it is supported through interfaces. Why multiple inheritance is not supported in Java? Because there will be confusion for the child class member to access. How does multiple inheritance implemented in Java? It is implemented using interfaces. What is hybrid? When you combine single level, multiple and any other type, it becomes hybrid. How will you restrict member of a class from inheriting its subclass? मतलब अगर आपको कोई मेंबर सब क्लास को नहीं इनहेरिट होने देना, उसको बना दो प्राइवेट. अगर आप पेरेंट को कुछ प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हो, उसको प्राइवेट रख सकते हैं. दैट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू चाइल्ड क्लास. दैट विल नॉट बी इनहेरिटेड टू. Can we assign subclass members if we create an object of a superclass? No. Answer is no. Can we access both superclass and subclass members if we create an object of subclass? Yes, we can access both superclass and subclass. What happens if both superclass and subclass have field with the same name? Only subclass members will be accessible. मतलब ये क्या है? Same members parent में भी है और same members child में भी. तो किसका access होगा? Child class. इतना सारा ads आ रहा है. Clock चलाते हैं. Will the code successfully compiled? Public class है, वहां पर एक वेरिएबल है. दूसरा क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी और उन्होंने टेस्ट किया. तो x इक्वल 20 इंट x इक्वल टू 30. कंपाइल होगा क्या? ये पूछा है पहले. तो
यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बी डॉट एक्स, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, देखो कोड क्या आएगा, कोड आउटपुट 30, परफेक्ट। और इस केस में पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास रेफरेंस ऑब्जेक्ट आएगा 30, आंसर इज 30 20। इस केस में चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास रेफरेंस, तो मेंबर इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो कहाँ पर का एक्सेस होगा, ओनली फ्रॉम पेरेंट। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका 30 20 एंड 20, 20 ये पेरेंट का वैल्यू, 30 20 20। Which of the following is correct way of inheriting class A by class B? Class B exchange C वाला, ये क्लास कीवर्ड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। इज इंटरफेस इनहेरिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास, आंसर इज नो, इंटरफेस हम डिटेल में पढ़ने वाले। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, पब्लिक क्लास M1 मेथड है, क्लास बी में M1 मेथड, दोनों भी मेथड है, क्लास ए में भी M1 मेथड है और क्लास बी में भी M1 मेथड है। तो यहाँ पर बी इक्वल टू न्यू बी, कौन सा मेथड कॉल होगा, बी इक्वल टू न्यू बी मतलब चाइल्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल होगी, परफेक्ट। ए इक्वल न्यू ए किसकी कॉल होगी, पेरेंट क्लास रेफरेंस पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, तो पेरेंट क्लास की होगी। और ए टू इक्वल टू न्यू बी ए टू डॉट M1 किसकी मेथड कॉल होगी, पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, मेथड इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो किसकी एक्सेस होगी, चाइल्ड क्लास, परफेक्ट। यहाँ पर बी की होगी, यहाँ पर ए की होगी और यहाँ पर फिर फाइल होगा प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू 50 वर्ड M1 और क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो ए इक्वल टू न्यू बी और आपने मेथड कॉल किया ए डॉट M1, कॉल होगा, यस इट इज नॉट प्राइवेट, तो कॉल होगा, तो M1 मेथड कॉल होगी और M1 में क्या प्रिंट किया, एक्स, एक्स तो सेम मेथड सेम क्लास है तो एक्सेस होगा 50, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यस इट विल बी 50। पैकेज 1 में क्लास ए है, पैकेज 2 में क्लास बी है, और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, और आपने यहाँ पर क्लास बी बनाया और क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया बी इक्वल न्यू बी, और आपने एक्सेस करना चाहा बी डॉट एक्स, क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, चाइल्ड को एक्सेसिबल नहीं, प्रोटेक्टेड बी डॉट वाई, यस इट इज ऑलवेज meant for the child class only, protected is something meant for the child class। b dot z can you access, no, because b dot x और b dot z दो वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये प्राइवेट है और ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सेम पैकेज में होगा और प्राइवेट सेम क्लास में, और b डॉट y बस एक्सेस कर पाओगे आप, so the code will not compile, first error, b dot x is private and b dot y is default members। chalo with that we covered your inheritance, go through all the content, go through all the interview question, and put as many as efforts in that, because if you know this then only you will understand polymorphism, what is method overriding, method overloading, finally keyword kya hota hai, all these things you will understand only if you are very much clear with this। तो नेक्स्ट विल बी लर्निंग पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसके बाद फाइनल कीवर्ड भी हम देखेंगे, एंड वंस दैट इज डन वी विल टॉक अबाउट द इम्यूटेबल क्लास abstraction, right? abstraction के बाद anonymous class, java at features and object class। वो object class की मेथड, object class के अंदर वो टू स्ट्रिंग मेथड है, जो मतलब कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, उसका रेफरेंस प्रिंट करते हो, तो इमीडिएटली आपका इम्प्लिसिट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है और वो कंटेंट, एग्जाम्पल लेट्स अभी अभी चाइल्ड क्लास को मैं प्रिंट कर, तो चाइल्ड क्लास प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कुछ आउटपुट आएगा ना, ये कहाँ से आएगा, स्ट्रिंग मेथड, अभी यहाँ पर मैं चाइल्ड प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, आई विल टेल यू, हेक्साडेसिमल हैश कोड और कंप्लीट पैकेज नेम। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, कंप्लीट पैकेज नेम, क्लास नेम @ हेक्साडेसिमल हैश कोड, तो ये कहाँ से आ रहा है, आई विल टेल यू। तो यहाँ पर इम्प्लिसिटली एक मेथड कॉल होता है, टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट क्लास में, और ऑब्जेक्ट क्लास में जो मेथड प्रेजेंट है वो क्या करती है, कंप्लीट क्लास नेम प्रिंट करती है, @ प्रिंट करती है, और इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग, मतलब एक इंटीजर मिलता है
कोई भी रेफरेंस होता है तो उसके एड्रेस को वो कन्वर्ट करता है इनटू इंटीजर वैल्यू, और उस इंटीजर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको ये वैल्यू मिलती है। विल बी कवरिंग दिस एंटायर ऑब्जेक्ट क्लास सेपरेटली, अभी इसको देखते नहीं है। बट एज ऑफ नाउ टू स्ट्रिंग इज अ मेथड प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट क्लास विच प्रिंट्स द complete package name, class name and hexadecimal conversion of your hash code. समझा तो ठीक है? We are going to, because that is something we have to learn. यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइम है उसको, ठीक है? चलो, with that we will stop, or shall we continue?